Mritunjay, am I audible? Yes, you are Google. Okay, so welcome everyone to day 2 of Android Study Jams. तो यार सेशन शुरू करने से पहले I'd like to congratulate every one of you कि आज से आप Android development journey अपनी शुरू कर रहे हो. So myself Damanpreet Singh and I'm from second year biotech. So in today's session I'll be taking the first half which is introduction to Kotlin and Kotlin Playground. So later half will be taken by Mritunjay. Mritunjay. Yeah. Hey everyone. This side, you're another speaker, Mrityunjay Pandey from Department of Textile Technology, second year, and I will be taking the second part, that is Flutter and emulator setup. And then together we will take your doubts at the end of the session. ठीक है, थैंक यू मृत्युंजय. तो फिर आज से हम कॉटलिन लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं. सो आप अभी फर्स्ट सेम में हो तो आपने सी लैंग्वेज शायद की होगी, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल बी अज्यूमिंग कि यू हैव नो प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस. सो आज बिल्कुल प्रोग्रामिंग बेसिक से शुरू करेंगे. एंड यस, अगर आपने कल का सेशन नहीं लगाया जिसमें हमने वर्कस्पेस सेटअप कराई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज एंड्रॉइड स्टूडियो यूज नहीं होगा. विल बी यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर. पर नेक्स्ट सेशन से पहले आप एंड्रॉइड स्टूडियो जरूर सेटअप कर लियो, बिकॉज अलोंग द सेशन विल बी मेकिंग एन ऐप. तो आपका एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा यार. बेसिकली इवन इन सेकंड थर्ड ईयर लोगों के पास एक प्रोजेक्ट रेडी नहीं होता रिज्यूमे के लिए, एंड प्रोजेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट. सो या, सो प्रोग्रामिंग बेसिक से शुरू करते हैं. सो बेसिकली एक प्रोग्राम क्या होता है? इट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि वो आपके लिए एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करे. आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, फिर एक कंपाइलर एक लेयर ऐड करके उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना देता है. तो बेसिकली ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, कॉटलिन, पाइथन एंड जावा. सो कोडिंग करते समय वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं. And for help to help us in coding, we can use certain libraries which can be pre-built or user made. So libraries का अभी तो हम इस सेशन में इतना यूज नहीं करेंगे, but you can explore it along the way. So दो टाइप की बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. सो वन टाइप इज प्रोसीजरल लैंग्वेज, एग्जांपल ऑन इट सी. और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट बेसिकली यार कुछ इतना नहीं होता, इट इज लाइक अ रियल लाइफ एंटिटी. सो ऊप्स और ऑब्जेक्ट्स आपको थर्ड या फोर्थ सेम में शायद कराते हैं अगर यू हैव दैट सब्जेक्ट्स. पर इस सेशन में भी थोड़ा बहुत करा देंगे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का. सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो जावा, कॉटलिन, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का. या सो बेसिकली जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो एक डाउट हमेशा आता है कि कॉटलिन में करें या जावा में. इवन एज अ बिगिनर इन फ्रेशर आई हैड दिस डाउट. सो द थिंग इज कॉटलिन जो है इट इज बैक्ड बाय गूगल एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. सो जिसकी वजह से जो कॉटलिन में नए फीचर्स अपडेट्स आते हैं वो दे आर वेरी एंड्रॉयड सेंट्रिक, जबकि जावा इज यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ थिंग्स, राइट. जावा में अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्प्रिंग वगैरह जो वेब में यूज होते हैं. तो जावा इज नॉट स्पेसिफिकली मेड फॉर एंड्रॉयड एंड इट एज वेल इट इज ओन्ड बाय ओरेकल. जैसे 2017 में जावा ने एप्लेट्स की सर्विसेज बंद कर दी थी, तो इट वाज क्वाइट हार्ड फॉर डेवलपर्स टू स्विच, राइट. सो पर कॉटलिन में ऐसा नहीं होगा. कॉटलिन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर एंड्रॉयड, राइट. सो एंड कॉटलिन इज मोर पॉपुलर इन एंड्रॉयड डोमेन. सो आपको रिसोर्सेज, सपोर्ट एंड कम्युनिटी फाइंड करना इजी होगा कॉटलिन डेवलपर्स की. Yeah, but Kotlin is not as well renowned in other domains because Kotlin is very specific in Android, जबकि Java काफी अलग अलग डोमेन्स में यूज होती है. तो बिकॉज Kotlin इतनी अच्छी लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, सो इन दिस सेशन विल बी यूजिंग Kotlin फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, राइट. तो अभी तक अगर कोई सेशन में डाउट हो तो चैट में पूछिए. हो एट द एंड ऑफ द सेशन विल बी टेकिंग योर डाउट्स, राइट. सो या, Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं.
सो आज के सेशन में वी विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड कॉटलिन प्लेग्राउंड। तो कॉटलिन प्लेग्राउंड बेसिकली एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें हम कॉटलिन का कोड रन कर सकते हैं। सो अग्रिम, कैन यू शेयर लिंक फॉर कॉटलिन प्लेग्राउंड्स? या आई वेट फॉर 1 मिनट। सब अपना कॉटलिन प्लेग्राउंड खोल लो अपने ब्राउजर में, देन विल स्टार्ट विद कॉटलिन बेसिक्स। और बफर वगैरह तो नहीं हो रहा? जरा चेक करके बता दो। सो आई विल वेट फॉर सम टाइम। आप सब कॉटलिन प्लेग्राउंड्स खोल लें। ओके, सो बफर नहीं हो रहा। अगर आपने कॉटलिन प्लेग्राउंड खोल लिया तो थम्स अप भेज दो चैट में। लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड बाय DSC NITJ इन चैट फॉर कॉटलिन बैकग्राउंड। Okay, so did you guys open Kotlin Playgrounds? Okay, so now we will start with Kotlin, right? So Kotlin is a modern programming language. ये recent है अभी काफी बाकी languages से C, C++, Java से, and it is more oriented towards Android. So Kotlin में ये होता है यार, basically code more concise हो जाता है Java से। अगर आप अभी जैसे बेसिक प्रोग्राम बनाओगे, जैसे ऐप बनाओगे फॉर कैलकुलेटर, राइट? कैलकुलेटर के लिए जैसे ऐप बनाई तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कॉटलिन यूज की या जावा यूज की। पर जैसे आप थोड़े बिगर स्केल में ऐप बनाओगे तो उसमें काफी डिफरेंस आता है कॉटलिन और जावा में। सो या कॉटलिन इज बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल टू जावा, कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव होती है, राइट? एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज कॉटलिन फर्स्ट बिकॉज कॉटलिन सपोर्ट्स एंड्रॉइड वेरी वेल। स्लाइड्स चेंज हो रही है क्या? So let's start with the Kotlin basics. एक सेकंड यार, यहाँ सॉरी ये इंटरनेट नहीं थोड़ा काम कर रहा, मैं दूसरा लगा के देखता हूँ। ओके ओके या सो अब आवाज क्लियर आ रही है, राइट? सो अगर Yes, आपने yes. कॉटलिन खोल लिया तो हम्म, एक सेकंड, वो एको हो रहा था यार। हाँ, ओके, तो अगर आपने
अब हो रहा है एको की आवाज़ ठीक है? Fine, fine. फाइन ओके सो अगर आप हाँ, हाँ, ओके तो आपने कोटलिन प्लेगराउंड खोल लिया तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिख रही होगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग पे मेन फंक्शन होता है ये। सो बेसिकली जब कंपाइलर को कंपाइल करना शुरू करता है, सो इट ऑलवेज़ फाइंड्स मेन फंक्शन तो कोड की कंपाइलेशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, राइट? सो ये जो फन लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है जो कंपाइलर को बताता है कि दिस इज़ अ फंक्शन। तो आप अगर ये बेसिकली रिज़र्व्ड वर्ड होते हैं। जैसे इसका अगर आप कंपेयर कर दो ऑरेंज से व्हाइट कलर पे स्विच हो गया तो इसका मीनिंग खत्म हो गया कंपाइलर के लिए। इसलिए इन वर्ड को हम ज़्यादा कहते हैं जैसा लिखा है वैसा ही यूज़ करते हैं, राइट? सो जब हम कोड करते हैं सो बेसिकली वी सम कीवर्ड्स, राइट? सो जैसे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वेरिएबल बेसिकली एक डाटा स्टोरेज टाइप होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है मेमोरी में। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल जैसे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इंट जो होता है वो इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है जैसे 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स राइट। जो स्ट्रिंग हो गया वो नाम वगैरह को स्टोर करता है स्पेस, एस्टेरिस्क वगैरह, चार भी ये कुछ स्टोर कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपको कोटलिन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है, सो 2 टाइप से हम उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। वन इज़ यूजिंग var var equal to 18 राइट। सो अगर मैंने इसे इस तरीके से डिक्लेयर किया सो अलोंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम आई कैन चेंज इट्स वैल्यू राइट। सो जैसे मैंने एज इक्वल टू 18 लिखा तो अगर मैं एज इक्वल टू 19 कर दूँ तो इसे प्रिंट करवाने के लिए वी यूज अ लाइन नोन एज प्रिंट राइट। तो इसमें हम जस्ट विल को ऐड करके देन वी रन द कोड। सो यहाँ पे हमें 90% होता दिख रहा है राइट। सो कोटलिन में बेसिकली सेमी कॉलम लगाने की ज़रूरत तो होती नहीं इतनी। आप अगर सेमी कॉलम्स को हटा भी दो तो भी ये रन हो जाएगा। ये बेसिकली लाइन सेपरेशन दिखाने के लिए होता है। या इट इज़ राइट। सो द अदर वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इज़ टू यूज़ वैल राइट। अगर मैं वैल इज़ इक्वल टू 10 यूज़ करूँ राइट और अगर मैं a की वैल्यू चेंज करने की ट्राई करूँ इसमें नहीं। तो बेसिकली क्या है वैल जो होता है ये इम्यूटेबल होता है। इसकी वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ साइकिल प्रोग्राम चेंज की जाती की सकती। तो अगर हम इसे रन करने की ट्राई करेंगे या एज़ यू कैन सी इट विल थ्रो एन एरर सेइंग वैल कैन नॉट बी रीसाइंड राइट। सो या सो जैसे हम मेन फंक्शन पे आते हैं फिर से तो फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता यार। ये फंक्शन एक डब्बे के जैसा होता है जिसको आप कुछ वैल्यू इनपुट में देते हो उस पे वो काम करके आपको एक स्पेसिफिक टाइप का आउटपुट दे देता है। तो जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसे दो नंबर है एक वैर एज हो गया वैर बी इज इक्वल टू 5 हो गया राइट। तो मुझे इन दोनों का सम चाहिए। तो उस सम के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहूंगा। सो व्हाट विल आई डू आई विल राइट द वर्ड टू टेल कंपाइलर दैट दिस इज अ फंक्शन ऐड और इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप की डाटा ये फंक्शन लेगा जिस पे हमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है राइट। सो ए टाइप इंट दिस इज द वे टू टेल कि ए वेरिएबल जो हम ऐड फंक्शन में यूज कर रहे हैं इट विल टेक वैल्यू ऑफ टाइप एंड इंट। तो फंक्शन क्योंकि एक डाटा लेता है उस पे काम करके हमें देता है और डाटा वापस कर देता है। सो वो जो डाटा वापस करेगा हमें वो किस टाइप का होना चाहिए तो वो भी हम पहले ही बता के रख देते हैं विच विल बी टाइप इन बिकॉज तो ऐड करके इंटीजर ही बनेगा। सो विल जस्ट टाइप ये तो अब हमने ये नया फंक्शन बना लिया ऐड करके जो हमें ए और बी का सम करके दे देगा।
अब कंपाइलर को कैसे पता कि इस फंक्शन तक जाना है? कंपाइलर तो जस्ट मेन फंक्शन पे जाएगा, देखेगा यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हुआ, बस प्रोग्राम खत्म। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शन को कॉल करना होता है एक टाइप से, राइट? तो इसको डिलीट करके फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन का जस्ट नाम लिख दो और वो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो जैसे मैं प्रिंट लिखूँ तो प्रिंट का मतलब अगर मैं फालतू चल रहा। अगर मैं ऐसे रन करूँगा इसे, राइट, प्रिंट दमन, प्रिंट एबीएस, प्रिंट जीडीएससी, तो ये क्या करेगा? अ, इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। वेर इसमें यूज नहीं किया इसलिए एरर दिखा रहा था। तो ये सब एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, पर अगर वी वांट इट इन सेपरेट लाइन, राइट, दमन फिर एबीएस फिर जीडीएससी, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एलन कर दिया। प्रिंट एलन क्या करेगा, दमन लिख के वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा आउटपुट के लिए, राइट? तो हाँ, वो डिफरेंट लाइन्स में प्रिंट हो गया, राइट? तो यहाँ पे तो हम फंक्शन पे बात कर रहे थे, ऐड फंक्शन, राइट? तो ऐड फंक्शन को अभी यूज में लाने के लिए, क्योंकि ऐड फंक्शन ये सारा जो है ये बस एक इंट रिटर्न करेगा और उस इंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट? तो आई जस्ट राइट प्रिंट और इसमें लिख देंगे ऐड को कॉल करने के लिए जस्ट ऐड फंक्शन का नाम लिख दिया और उसमें पैरामीटर्स पास कर दिए, एज एंड बी। एंड ऐसे हमें इनका ऐड करके आउटपुट दे देगा। अभी इसके बाद मैं थोड़ा एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो लाइक थ्रो इन कर दो। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं यार, फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? यार फंक्शन ओवरलोडिंग ये है, ये सुनने में कम्प्लेक्स लगता है पर है कुछ नहीं। फंक्शन ओवरलोडिंग है जब दो फंक्शंस का नाम हम सेम रख देते हैं, राइट? जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन ऐड, अभी एक इसी नाम का फंक्शन अगर हम और बना लें, ऐड करके एक टाइप कर देगा और एक रिटर्न कर देगा। अभी जो सेकंड ऐड फंक्शन है इसका काम बस ये रखते हैं कि जो भी नंबर आपने दिया उसमें 5 ऐड करके दे देगा, राइट? तो बस फंक्शन ओवरलोड में बात ये आ गई कि जब आपने ऐड लिखा, राइट, तो जब फंक्शन कॉल आएगी, ऐड का फंक्शन मेन फंक्शन बुला रहा है, राइट, तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन जाएगा वहां? तो क्योंकि अगर आप देखोगे प्रिंट एलन ऐड एज दो पैरामीटर्स पास किए हैं, राइट? तो दो पैरामीटर्स पास करने का मतलब हम इस फंक्शन को कॉल करें क्योंकि ये फंक्शन दो पैरामीटर्स की आस्क कर रहा है। तो अगर हम रन करेंगे तो इट शुड अगेन शो 23, राइट? या तो बट अगर हम बी को हटा दें और अब कॉल करें, इससे अपना नहीं रहेगा कि बी की वैल्यू भी सेम है, right? जब हम सिर्फ एज पास करेंगे मतलब सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो सेकंड वाला फंक्शन कॉल जाएगी और इसमें 5 ऐड हो जाएगा। पर अगर फिर से बी ऐड कर दिया तो 25 आ गया क्योंकि फिर फर्स्ट वाला फंक्शन ऐड कॉल होगा। आ रहा है समझ अभी तक सेशन में? सो नेक्स्ट थिंग जो हम करते हैं, इट इज समथिंग एज फॉर लूप। अगर जैसे स्पॉटिफाई पे एक गाना अच्छा लगता है तो वी पुट इट ऑन अ लूप, मतलब वो दोबारा 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 चलता रहता है तब तक हम उसे बंद ना कर दें, राइट? तो जैसे मेरे पास टास्क है कि
वेरिएबल है एज 5, उसे मैंने 10 बार प्रिंट कराना है लाइन। तो मैं हूँ यार स्मार्ट डेवलपर, ओके, तो 10 बार प्रिंट एलन लिखता अच्छा नहीं लगता इतना, ठीक है। तो हम एक 10 का वेरिएबल लगा लेते हैं। और इन कॉटलिन कॉटलिन इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये जो फॉर लूप है, आई नाम के वेरिएबल को आई इन 1 to 5 मतलब 1 2 3 5 ये ऐसे करके प्रिंट करके दे देगा हमें। नेट थोड़ा स्लो है, तो ये कंपाइल करने में टाइम ले रहा है। अभी भी लैग कर रही ऑडियो? It's fine. It's fine, Daman. You continue with your session. ठीक है, ओके। एक सेकंड यार, ये रीलोड करता हूँ मैं इसे। नेट ही बिल्कुल नहीं चल रहा। Daman, you are mute. या सो नाउ इट्स वर्किंग। तो जैसे देख सकते हो फॉर लूप में हमने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई इन 1 to 5 किया, और ये आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमें प्रिंट करके दे देता है, राइट। तो ओके, तो यार लेट्स जस्ट सपोज हमारे पास एक कोड लिखना है कि मेरी एज लेगा और ये बताएगा कि इफ आई एम एलिजिबल टू वोट, राइट। सो मैं अगर वेरिएबल हूँ दैट एज इज इक्वल टू 20, सपोज मेरी एज ले रही, ठीक है। तो अभी हम चेक करना है कि अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है तो आई कैन वोट, अगर मेरी एज 18 से कम है तो कोड रिटर्न कर देगा दैट आई कैन नॉट वोट, राइट। सो इसमें हम इफ एल्स कंडीशन इसे, सो इसे लिखने का सिंटैक्स ये है, इफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, तो ये प्रिंट कर देगा यस यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स println no। हाँ यार, ये सिंट ऑफ द टाइम कर देगा। हाँ यार, कंपाइलर फिर बहुत टाइम ले रहा है। हाँ यार, इसीलिए कहते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज कर लिया करो, ऑनलाइन कंपाइलर इतने डिपेंडेबल नहीं होते।
अभी रात को आई गेस ट्रैफिक वगैरह भी जाता है। एक सेकंड, आई विल रीलोड इट अगेन। चेंज कर देखो नेट फिर तो। Sorry, folks, for the inconvenience in the session. There is some internet issue. The man will be back after a minute. Till then, keep practicing on the playground what the man had told to you just now. And you can ask your doubts in the chat box as well. We will reply. इशू आ गया था एनआईटी जलंधर इंटरनेट। So let's go through some slides. स्लाइड्स दिख रही है क्लियर? Yes, it's visible. राइट। उसको हाइड कर ले डीएससी वाला। So this code basically you can see called the so इसको बेसिकली फंक्शन क्या है जिसमें सिंपल प्रिंट एल स्टेटमेंट लिख के हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, राइट? So fun is a specific keyword which has a special meaning to compile. So इसलिए इसे चेंज वगैरह नहीं कर सकते। हमने दो फंक्शंस देख लिए, एक फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो देख लिया, पैरामीटर्स देख लिया, रिटर्न देख लिया कि कौन सी वैल्यू यूज करके उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। सो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स देख लिए, वैर जैसे वैर को हम स्टार्टिंग में जो वैल्यू देते हैं उससे चेंज कर सकते हैं, पर वैल को जो वैल्यू देती है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम सेम रहती है। सो इट इज इंटीजर 5 एंड इट कैन बी रीअसाइन्ड, राइट? सो हम इफ एल्स स्टेटमेंट देख रहे थे। So I'll just share the screen for Androids. Right, so हम if else statement देख रहे थे। Is the guys for Android Kotlin playgrounds?
पैनल मूव हो गया, कितने दिखा रहा है जी पैनल, पता नहीं। हाँ, बैकग्राउंड यार लोड हो गया। सो हम इस प्रोग्राम पे थे, हमने एक वैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया एज। एज को यार बेसिकली जब हम 20 देते हैं, इट इज ऑलरेडी असाइंड एज इंटीजर, राइट। अब आप एज में जैसे स्ट्रिंग वगैरह वैसे स्टोर नहीं कर सकते, पर जैसे एज को 20 दे दिया, हमने कंडीशन लिखी, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इट विल प्रिंट यस यू आर एलिजिबल टू वोट एल्स नो, क्योंकि मेरी एज 23। तो प्रोग्राम ने देखा यस हिज एज इज ग्रेटर देन 18 सो यू कैन वोट एल्स, ये नो प्रिंट कर देगा, राइट। ओके, सो ये हो गया। सो म्यूटेबल इम्यूटेबल वेरिएबल देख लिया, इफ एल्स देख लिया, राइट। सो बेसिकली क्लासेस और अगर हम ऑब्जेक्ट्स का देखें, हम थ्रू आउट दिस सेशन डेवलपमेंट में इनका इतना यूज तो करने वाले हैं नहीं। सो क्लासेस का वैसे बता देता हूँ, क्लासेस कुछ नहीं होती यार, दीज आर लाइक ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं हूँ, ओके, दमन, मैं रियल लाइफ एंटिटी हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट हूँ, पर मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो पर मैं आता क्लासेस की कैटेगरी में हूँ, ह्यूमंस, राइट। जैसे स्केयर है, स्केयर की अब स्केयर एक क्लास है, राइट। स्केयर का मैं बोलूंगा, किसी के दिमाग में कोई स्केयर आएगी, किसी के दिमाग में कोई स्केयर आएगी, वो ऑब्जेक्ट है। तो स्केयर के पास जैसे बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक कलर होता है, एक साइज होता है, राइट। स्केयर का साइज कितना हो गया, एक लेंथ कितनी होगी, और एक कलर। तो जब हम इसमें यूज करते हैं, तो बेसिकली एक क्लास बना लेते हैं स्केयर टाइप की, और उसकी दो प्रॉपर्टीज रख देते हैं, एक वन इज कलर एंड वन इज साइट, राइट। और क्लास काइंड एक डाटा टाइप की तरह एक्ट करती है, जिसकी यूज से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एंड जो क्लासेस होती हैं, ये हम डिक्लेयर मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। क्लासेस के और मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे हम स्केयर की एक क्लास बनाएंगे, तो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, कलर यूज करेंगे, कलर होगा रेड ब्लैक ब्लू। सो कलर को हम स्टोर करने के लिए यूज करेंगे एक इंटीजर स्ट्रिंग टाइप, और जो साइट होगी वो होगी 2 3 4 5, सो उसके लिए हम इंट का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मेक अ क्लास विद द नेम स्केयर, सेकंड। हाँ, एक सेकंड। तो अगर आप इसमें देखो, राइट, तो हमने एक क्लास डिक्लेयर की, जिसका हमने नाम रख दिया स्केयर, और स्केयर की दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा ये, विच इज कलर ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड अनदर इज साइड ऑफ टाइप इंट, राइट। सो जैसे हम जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके लिए कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे टाइप टू मेक एन ऑब्जेक्ट, हम वेल टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और टाइप स्केयर, क्योंकि मैंने कहा क्लासेस एक टाइप का डाटा टाइप ही होता है यार, ठीक है। क्योंकि क्लास का नाम स्केयर था, इसके लिए हमने आके स्केयर्स कर दिया, राइट। और क्योंकि ये दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, वन इज ब्लैक एंड वन इज वाइट, राइट। तो अब इसे एक्सेस करने के लिए, तो मेरे पास ये स्केयर आ गया स्पीकर, ठीक है। अब मुझे इसे प्रिंट करना है कि इसका कलर क्या है। तो मैं जस्ट इसके साथ डॉट करके कलर कर दूंगा, बिकॉज हमने इसकी एक प्रॉपर्टी का नाम कलर लिखा है। सो इट शुड गिव मी द आउटपुट ब्लैक, राइट। और अगर मुझे चेक करना है कि इसकी साइड क्या है,
सो उसके लिए डॉट साइड करके पा देंगे एंड इट प्रिंट 5। हाँ यस राइट। तो ज़्यादा इतना भी डीप में जाने की लोड नहीं ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के लिए। डेवलपमेंट का यार ये है कि बस बेसिक सीख के शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम पहले सारा कुछ सीखने लग गए तो बस 4 साल ऐसे निकल जाएंगे, इसलिए बस डेवलपमेंट करते करते साथ साथ सीखी जाओ। तो दिस वाज इनफ फॉर Kotlin basics, right? So now I'd like to invite Mrityunjay to introduce you to Flutter, right? So Mrityunjay. Am I audible, Daman? Can anyone confirm? Am I audible? Yes, Mrityunjay, you are audible. Okay. Let me share my screen first. Slides are visible. Anyone can confirm? Yes, they are confirm. Yes, they are visible. Wait, something. Yeah. Is it visible, Daman, now? Hello. Am I audible, Daman? Daman can confirm. Yes, Mrityunjay, it's audible and screen is also visible. You can carry on. Oh, okay. Thank you. So basically, folks, we will be introducing you to the Flutter in this Android study jam session, which we're carrying on through these days, and it's day two. And here means we will now talk more about Flutter in the Flutter Festival, which we will do later on. And here we will just give a brief introduction about Flutter. That what is Flutter, why it is used, what are its advantages, disadvantages, and why to use Flutter than any other development like Kotlin, React, and Native, and these all platforms. So let's go with the Flutter. So Flutter, what is it? Flutter is an open source framework by Google. It is developed by Google, so basically it is trusted for building beautiful, natively compiled, and multi-platform application from a single code base. So here we are going with the three things, that Flutter, and Flutter with another first basic part is beautiful, second one is natively compiled, and third one is multi-platform application, and these all are combined under a single code base. So what does it basically means? So beautiful, I hope you all can get it, that what does beautiful mean? Then sundar, acha. So the code which we will write in Android Studio, and the Flutter code, that basically, so that is beautifully compiled because that is intended by different colors and different spaces, so that looks beautiful in one way. So that's first thing, the beautiful code, natively compiled. So as you are fresher, so not going too much detail in the compilation part, but understand that you know that from the basics of the programming, that what we write code, that is our native code, and that is compiled to the object code. Okay, that is understand by the computer. So here no compilation is required, means it is natively compiled, like जैसे हम लिखते हैं वैसे ही वो compile भी हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने उसमें लिखा इट्स फॉर एग्जांपल, किसी भी टेक्निकल वर्ड में नहीं जाते अभी, हमने लिखा डिजाइन. So design at is as it is compiled in the operating system. Okay,
ये नहीं कि डिजाइन को पहले डी का आस्की कोड लिखेंगे, उसको बाइनरी में करेंगे, उसको फिर कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेंगे, सोर्स कोड को, तो वैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज नेटिवली कंबाइंड, द सेकंड थिंग, होप इट्स क्लियर। And the third thing is multi-platform application. Now, this is the most important thing and the beauty of the Flutter. That what is multi-platform application? Multi-platform means टू थ्री और मोर प्लेटफॉर्म, मतलब एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशन रन कर सके, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अ लिटिल बिट लेटर ऑन, ओके। सो फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस, लाइक एक कोड हमने लिखा एंड वो हर जगह के लिए चल रहा है, लाइक ये मैक के लिए भी चल रहा है, विंडोज के लिए भी चल रहा है, एंड्रॉइड के लिए भी चल रहा है, आईओएस के लिए भी चल रहा है, मतलब एक ही कोड लिखते हैं और वो सारे जगह रन कर रहा है। सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फ्लटर. So I hope you clear about what is Flutter. Okay, it is an open source, and the most important thing, open. Okay, we will discuss it later. Yeah, now that's the point. Open source. I think most of you not have idea about open source. Open source क्या है? Open source ये तो बवाल चीज है, मतलब हाँ literally ये बवाल चीज है, because open source will help you to learn more, because we work on projects directly, and working on projects it means real time projects, okay. And we will find out at a basic level, I'm telling you that we will find out errors and things, like we can contribute to the project that is of any another community. So it is open source, and the community, the people who do open source, they form open source community, and believe that it is the biggest community, open source community in the development process. So moving further, yeah. The open source software is code that is designed to be publicly accessible. Anyone can see, modify, and distribute the code as they see fit. ठीक है, अब फ्लटर पे भी हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है। मैं आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक ऑफ ओपन सोर्स, वन सेकेंड, वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. Yeah, this is the Flutter GitHub repo, and yeah, and at this place we contribute to the Flutter development team. Okay, I hope you all can see the link. You can confirm it is visible or not. Visible, Agree. Mrityunjay. Visible. Okay. So now open source. I had provided the link. You can check it out. That there are, I guess, around 446K projects only upon Flutter. So if you learn Flutter, you can contribute as much as you can. You want, basically, you want. Take care. So it's upon you that how you take the things to be done. So open source is code that is designed to be publicly accessible. Like these repository are open to all. You anyone can contribute. Anyone can contribute. It's not like people with further degree or further specification or a further branch or a further means. Another thing means there's no restriction that only this person can do, that one cannot do. It is open to all. That's why it's open source, and it's publicly accessible. Yeah, anyone can see, you can see, modify, and distribute the code. You can send it to anyone, like this Flutter repo I had sent it to you also. It is accessible by all. सो नीचे you can see a meme that क्या बवाल चीज है, सारा सिस्टम मिल जाता है. So literally yes, it is a gem, open source, and doing it with Flutter gives you another level of enjoyment, like because Flutter is like no code development. It's no code development because here things are very simple. It's not messy, like you have to do too much of coding and all. No, it's just things are simple, and you will have to arrange it in manner. That's it. We will discuss it in the Flutter festival of coding and all of the Flutter journey, so don't be worried.
So the reason that why you should use Flutter, super easy. That we use you all know language like C, C++, Java, Python. So similar to that, there is a language Dart, and it is as easy as Python or JavaScript. These are the basic language, so it is as easy as Python. And compared to its counterpart like React Native, Swift, Java, these are also platform development things. So Flutter is much easier to learn and to use rather than React Native, Swift, and Java. Definitely, in compared to React, Java, Swift, Flutter is too much easy. I guess you will took around 2 to 3 months to learn the complete Flutter, and you can develop projects as well, which is too beautiful and like uncomparable if your idea is pretty good. And confidently build an app within a week. Yeah, it's true that you can build an app within a week. Like for if you are going for a hackathon and all, so you can definitely build a basic app within a week and then can present at that hackathon. So these are things to be learned. It's easy. And plenty of resources available, definitely. And Flutter is now developing, so resources are also developing. And some documentation you can find documentation and code labs. I will provide you the links of the documentation. And you have seen Flutter official YouTube channel as well. Stack Overflow community, the biggest community of where people ask doubts and resolve doubts. And there are courses also like App Brewery and Flutter Apprentice, and blogs you can also refer like Medium, Frit Code Camp, Coder, and all. I'm providing you the link of YouTube channel and documentation as well. Wait for a minute. Yeah, I had provided you the link of the documentation of the Flutter, and rest of the YouTube channel. I'm providing it to you. Just a minute. Yeah, you can refer YouTube channel as well as documentation. There's no issue. The one who used to go through video, they can definitely go through YouTube channel, and another one who likes to just read things, they can definitely go through the docs. I prefer docs, definitely. Sorry guys. Another important reason, it is cross platform. What does cross platform mean? So cross platform means you can, with one single code base, you can use it on multiple platforms. So basically this cross platform means like React Native backed by Facebook, Xamarin by Microsoft, and AngularJS by Google. And this I had already told you that single code base is only required for the platform development, and performance by design, customize every pixel. And yeah, it's a very good point that it customizes every pixel. You don't need to just drag and drop pixels like we have to worry about like 50 pixels, because most of us do not have idea about the designing part of pixels, mainly like 144 pixel, 50 pixel, how much is this. So we don't need to worry this in Flutter, because it Flutter already customizes every pixel. You don't need to worry about. So one code is there. When using Flutter, 90% of the code became multi-platform and only needed to be updated once. Senior software engineer 10 cent. So it's true that 90% from a single code base, I guess you can copy the whole code from the repo and send it to anyone, and they can use that code easily. No need to change if they are working on the different platform as well. Okay. It's very easy to use. 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. Yeah, sorry for the disturbance. So
Continuing further, so you can copy 90 means you can copy the whole code and that will perfectly run if you're using the platform is same. Okay, like Windows to Windows, Mac to Mac, iOS to iOS, no need to change. But if you are copying from Windows to Mac, then only I guess 10% of the code you need to change. Rest 90% of the code is, I guess, 99, it's 95 you can say. So most of the code is same, you can only change some like Gradle version. These are the things you need to change, so it's easy to use and it's high performance. It's been it's a code that a fast app is great but a smooth app is even better. So basically you can build a very smooth app with Flutter, and it's designed from its designing part to the hot reload options. You can build a very good app using Flutter. And there's no JavaScript bridge, so time taken is very less, much faster than React, because no compilation is done here in different language. It's React means native. What we write, that same got compiled. Okay, with optimization near to on pair with native performance, optimization is required at very low level and handle frequent UI means if you will change the UI, then using the hot, I will show you in my Android Studio, that using that hot reload option you can easily see that how changes got reflected, which is not in other, yeah, platforms. Okay, you can use debug mode. It's quite easy. See, just in time debugging is very easy in Flutter. Yeah, you can do it in seconds, it doesn't take too much time. And release mode ahead of time definitely you can release your versions, you can see it on your emulator. I will show you that how to set up the emulator at the end of the session. So don't be worry about these things like emulator setup and all, I will show you later on. So hot reload, what I was talking about, that's hot reload option. It's a very, means you can say, crucial thing that make it say different from the different platform, that hot reload option. Okay, so there is no need to run another Gradle build. You, if you had used Android before this session, which is not expected because we are starting from the beginning point. So means when later on you will use your Android, you will see that building Gradle will take the maximum time. Okay, so Gradle build is literally taking too much time. You need to, means I guess sometimes if you'll open your Android with a different version, different Gradle, then it might take 20 to 25 minutes to build the Gradle. So it's a big thing, you need to give time to for the Gradle build. So this option is not in Flutter. Okay, you did not to build Gradle, which will take time. Okay, so it's pretty cool. And development time is often reviewed. Definitely development time often reduced by 30 to 40%, because if you are saving our 20 to 25 minutes of Gradle building things, it will save time. Real time changes. So hot reload option is like you have seen lightning, this one. So that option is of hot reload. So once you will click that option na, it will automatically reflect changes on your whatever web app you are building, or just application. It will just real time changes, it will show the real time changes. Once you will click, the changes will occur. Okay, it's not like you will have to wait for a Gradle building for 20 to 25 minutes. It's not like that. Once you will click, the changes will get reflected. Okay, so reloads as soon as you save the live file. If you do Control S, you will see that automatically hot reload got clicked. You need not to click the reload option again and again. And only error free code is sent to device. Yeah, it's true that one you cannot click, means you can click but you will not, it will not get debugged. Okay, because it's when first get debugged, then it runs. So only if you will get error, then debugging is not possible. So running code doesn't make any sense, because आप गलत चीज को रन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो एरर ही है. So running means reloading option is not for the error वाले code पे. Okay, and faster compilation time, you got it. Why? Moving further, so it's designing power. 1 second.
Yeah, designing power. So I told you from the definition of the Flutter that designing is an important part of the Flutter stack. So material designing for Android, yeah, different designing themes are available for different platforms. As you know that Flutter is cross-platform, so different designing are available for it. Like for Android, it's material designing. We call it material designing for Android. And the second one for iOS developers, it's Cupertino widgets. Cupertino is for iOS, material designing for Android, and conditional designing based on OS for application 8 version or once. And it's pretty cool thing that designed once. Because as you know, 90% of code can be copied, only 10% need to be changed. So designing part doesn't need any changes because designing is same. You are going to carry for different platforms. So design only once and you can use it many times. Doesn't matter at all. Now the most important part of the Flutter is like everything is a widget. Okay, everything is 1 second. Yeah, I'm back. So everything is a widget in Flutter. Okay. Yes. Yeah, in Flutter, it's slightly from the we are going to the development part. Okay, so Flutter is basically what we create application is basically widget. You can just imagine it as boxes inside boxes inside boxes inside boxes. Okay, these are small blocks, and these all are covered from the big block, then bigger block, then more bigger blocks. Okay, I hope you got it. It's like widget, and all are contained inside one more bigger widget. Okay, so this all are like tree structure. एक पेड़, उसकी जड़, फिर उससे निकली हुई small branches, then उससे small branches. So these are all working with the same flow. So that's why designing parts is easy in Flutter, because we all designs are connected. You don't need to do things in different forms. Okay, so going with the PPT, so modern framework that takes inspiration from React, definitely. As the Flutter is a developing platform. Okay, so it copied some parts of the React, because yeah, we know that we have to take good things, either it is copied only, but think we have to only use it. Okay, doesn't matter it is copied from anywhere or not, it doesn't matter a lot to us. So modern framework takes inspiration from React, definitely. It is some parts of the some designing parts like don't need to worry about these words: scaffold, okay, text bar. These are the words, technical words. So these are carried from React. Okay, so these are copied. So easy to wrap one widget inside another. This is what I was talking about. Like container के अंदर container, उसके अंदर container, and container everywhere it is container. So Flutter is also called a box of containers. Okay, whenever you take any container, you will take different container from outside and inside as well. So it is box of containers. Okay, so easy to wrap one widget inside another. Okay, and the complete application, the application which we will make, it is also wrapped inside a widget which we call create. We will go later on about this. So it is also wrapped inside a complete a bigger widget, you can say. Okay, like in that Kotlin, what the man had said that fun main. Okay, so what fun main के अंदर सारा कोड था आपका. So okay, so that is similar to widget. Fun main के अंदर सारा code. Once fun main is wrapping all the code. So here also there is one main function which wraps all our application code. Okay, so it is widget inside another widget, and it will be write once and create multiple. Definitely once you will
create one widget, then you can copy the part or copy the name only. You can call it multiple times as wherever you want, and you can change the specification as well. You can change the color, you can change the text style, you can anything you can change. Okay, there's no much issue. And custom widgets, yeah, you can make your widgets as well. Okay, but it is not necessary because there are I guess too much means lakhs of widgets present in the Flutter SDK. So I guess whatever you can think at this particular stage, not I'm talking about when you will be pro in Flutter, at this particular stage you will get everything widget. Just you need to search, if you do not know, you can search it on Google as well. Okay, that whatever widget you want to add in your application. And it's a pretty cool thing. Two types of widget: stateful widget, stateless widget. Not much more going into the detail, but just for the sake of knowledge, stateful widget, state changes and rebuild. Okay, state changes means what you can say. You can say constant. You uses the word constant. Constant means same. So it is state changes मतलब constant नहीं रहता. That means it whenever you want to change, like you want to change colors multiple times, so you will have to use stateless widget. That means never changes वाला. Okay, and stateful when you do stateful, sorry, stateful widget. And if you do not want to change your color, you know that it must going to have constant. Okay, for example, you know that our flag have three colors. Okay, tricolor. So you know that there are number of color is equal to 3 in our flag. So it is stateless. You no need to change that because हमारे flag में color 4 नहीं होंगे, color 5 नहीं होंगे. So you know that very well. So you are pretty sure about your data. You are pretty sure about your design. So you need not to change these things. Okay. So these are stateless widgets. ठीक है? Then life cycle of a widget and its component. You will get it later. I will tell you in the session of Flutter Festivals. So now moving further, 1 second. Okay. So I guess this much reason is enough, but for the sake of knowledge, I will tell you some more reasons of Flutter that cut down testing time. As we know, why it cut down testing time, because of hot reload, uh, and there is no JavaScript bridge, so time taken is very less. Okay, lightweight component with superior performance. Definitely, the widgets are a very small size. Older devices get the same UI from Jellybean and iOS. Jellybean and iOS, you can download emulator. I will show you just in 5 minutes. And you can, yeah, that worldwide event. The Flutter Festival is a very big event for all the Flutter developers across the world because it is Flutter Festival hosted by Google, and it is the biggest event. It's one of the biggest event of Google community, developers community, GDs, what you can say, Google Developer Groups. So yeah, you can participate in that as well and many more. So this much reason is enough for Flutter. And app build using Flutter: Google Ads, Alibaba.com, Dream 11, Google Assistant, SpaceX Go, Hamilton, ड्रीम 11 तो सबको जानते होंगे, जीपे, कल न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्लैट टिप्स, क्रिप्टो, द लिफ, रिफ्लेक्टली, क्लास टमी, Tencent, PUBG, you all know, BMW, eBay, Postmuse. So these are the things, these are the apps which are built using Flutter. And this Flutter community is if it's developing also. Okay, so there's no need to much take load about what will be its future. It's definitely you can see it's rising. There's no need to worry about. So yeah, before if anyone have any doubt, they can ping to the comment box. We will try to answer that. And before that,
Yeah, let's ending before the session. Let's move to the Android Studio and we will set up the emulator. Okay, so emulator setup will be continued within 2 minutes. Okay, uh, till then, if you have any doubt, you can ping to the comment section. We will start emulator setup in 1 minute, just in 1 minute. Till then, open your Android Studio. Okay, yeah. Okay, okay. So hope you all have your Android Studio, and we will be starting the Android emulator setup. Okay, so stop sharing, present, share screen, share window. Is my screen visible? Anyone can confirm? Agrim, Daman. Yeah, it's visible. Mrityunjay, Oh, carry on. okay, okay, thank you. So open any one of the open. You can open any project like file. You can like from here new, just for the setup only I am telling you. Here new project, and you can select any of the dummy project like basic activity, material 3, empty compose activity, navigation activity. So we will be using basic activity. Okay, so you can put here the name like here GDSC. Okay, and location, language, Kotlin, API. You don't need to change these things. Okay, you can only change your name and finish. This will create your project, and it can take time depending on your internet connection, so no need to worry about. We need not to look on the code these things. We are here to just for the setup, emulator setup. Later on the session you will know how to develop apps, so be continued with the Android study sessions. Okay, look here, Gradle building, what I was telling you about, it takes time. Okay, Gradle build model, these all are Gradle things and it takes time. So before let's start, let Gradle sync in process. We need not to run, so we will not wait for the Gradle to continue. So let's start. Here you can click here, yeah, device manager. This symbol, you all can click and it will pop up device manager. You will not, you need to click it on device manager. Like I have these two virtual devices. So if you are not using this, you will have zero. You will only get an option here, create device and device API size on text action, and here you will get blank, no, nothing is here.
and then you will have to click create device, and you can use here category phone, tablet, wear OS, TV, automotive. So we are here, we're going for the phone, and you can choose any one of the phone like Pixel XL, Pixel 6 Pro. This is basically these option are given to test the to for the testing of the application designing, like it is working on all things in a proper way, in a selective manner or not. So Pixel 5, Pixel 4a, and let's continue here. Like see Nexus Galaxy Foldable, मेरे पास तो है भी नहीं. So let's go with Pixel 4a, 58 440 dpi. Okay, so let's go with Pixel 4a, and we will click then next. Okay, so here there is an option of release version. You will have to download anyone like SV2, SR, R I am having, so I will download S. Okay, so you can download S, means you can download any one of your choice. It doesn't matter. Just for the sake of knowledge purpose, it will take time. Yeah, depending on the internet connection, it will take time. I am also I'm also having a slow internet speed of NITJ Wi-Fi. We can only wait. Yeah. So, uh, yeah, definitely, definitely. 1 second. Its size is so too big, too big, too big. 1.4 GB. Definitely, it will take time. So depending upon, I am not showing you that I can't wait for just 2 and 3 hours for the downloading. So wrapping the session with this thing that this downloading component will get filled up to the here, that 100% download will get completed, and then you will get finish option. Okay, activated. Then you will have to click finish. Okay, then another finish. Like I will have to cancel this. I will just go with the next. Okay, suppose then this once you will click finish, you will get this thing. Okay, yeah, you will get this thing. Then you will AVD name. I will not advise you to change the AVD name because it is help you to just recognize that which thing you has used and which API you had used. So you will have to then click on the finish. Then it's creating Android device. It takes too much of RAM. Like my laptop is now getting heated. So this we had created Pixel 4a API 30, and then you will have to run it. Okay, this these are the option. You can duplicate, wipe data, cold boot, so on it, and then delete also. Okay, so here you can see I was using these two Pixel 4 XL API 30 Android 11. Its size was 12 GB and it's 9.2 GB. So basically, these take too much. Android Studio take too much of space. Okay, so we recommend you for going for a good laptop if you will need development in Android section. So this we have created this. Okay, then you will run it. This launch this AVD in the emulator. This play button we have to click. I had clicked it. Now wait for its launch.
It's launching. You will have to wait. Yeah, this I was talking about. It is starting. Emulator is starting. Just you see it. It is purely a mobile, a virtual mobile, and it takes a lot of space and RAM as well. It is now starting. We will have to wait for it. Definitely, it depends upon your internet connection. That how is internet at your place. I hope it starts. Yes. It is purely a phone, like you will see option here, gallery, call, messages, maps, camera as well. You can use it just like a phone. Okay, and here we will see that whatever we build, whatever application we build, for example, I have just yeah, means whatever application we have. Okay, we can see here that how it got designed and how it worked. Okay, so I hope this emulator setup is complete and you don't have any doubt about this emulator setup. If you have any query regarding, I will take 1 minute for your query. If you have any query regarding the emulator setup, then definitely you can ask in the comment section. There's no issue. After that, we will wrap up the session with your doubts if you have any query.